ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Friends, if you rest, you rust. Remember this. Today we are going to discuss mitochondrion, which is otherwise known as powerhouse of cell. Why? Because it is concerned with the synthesis of ATP molecules. In these ATP molecules remain energy. So this organelle synthesizes the molecule which is rich in energy. That is why it is called powerhouse of cell. It is our ATP synthesis करने वाली मिल, वो अपनी मिल है. Now some of the things here I have already written in front of you, so as we can get some more time. This lecture will last for around about only 35 to 40 minutes. Now it must be stained. Without staining we are not able to watch it under the microscope. It must be stained. उसका मतलब क्या? वो स्टेन होना चाहिए, उसका मतलब क्या? There must be any substance which can give color to this organelle. That substance is known as stain. तो अपने को उसके ऊपर ये डालना है substance. That is, वो जो स्टेन है उसका नाम है Janus green B. So if we put one drop of this Janus green B on the cell, mitochondria, we are able to see colored one. उसको ये रंग लग जाएगा, Janus green B का कलर लग जाएगा. Then if we observed it under the microscope, we will be able to identify this organelle very clearly. નહીતર આમનામ આપણે સેલ લઈ લીધો. Suppose I will take some of these cells from the inner side of the cheek. ગાલની અંદરની બાજુથી લઈ લીધો સેલ. Then I will put it on the slide. और स्लाइड को मैंने माइक्रोस्कोप में डाला, रखा, देखा, मुझे सिर्फ अंदर वाटर 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 जैसा देखने को मिलेगा. लेकिन मेरे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो मुझे देखनी है तो अंदर है, बट इट लुक्स लाइक ओनली वाटर है. तो मारे एने कलर लगाड़વો પડશે. दैट कलर लगाने का काम को क्या बोलते हैं? उसको स्टेनिंग करना पड़ेगा. और वो जो स्टेन है, वो जो कलर है, उसका नाम है Janus green B. ओके. So if we want to study animal cell, तो आ બહુ સારું પડશે એના માટે. ગાલમાં અંદરથી સેલ લઈ લો, સેલ ले लो, ये जो अपना चीक वाला पार्ट उसको अंदर से ले लो. Suppose I am adding methylene blue. It's a stain. Generally you can observe this stain in laboratory of 8th standard, 9th standard and 10th standard. Biology lab માં જો ગયા હો તો એ આપણે મૂકીએ એટલે એનું ન્યુક્લિયસ મસ્ત કલરવાળું થઈ જાય. પછી આપણે જોઈએ તો we are able to observe its nucleus colored. Okay. Similarly, suppose we need to study plant cell. For that we are selecting now is which plant? Onion. ડુંગળી લઈ લ્યો, ડુંગળીને કાપી નાખો, ત્યાં બધા લેયર્સ નીકળે, ખબર છે? ટેક વન સિંગલ લેયર ને એની જે ઇનર સાઈડ હોય ને એને ફોર્સેપ થોડોક અંદર ખૂપાડી દેવાનો. એન્ડ ટેક very thin layer on the slide and put methylene blue on it. You are able to observe very neat and clean cell wall plus nucleus. સ્કૂલ ખુલે ત્યારે આ બધા પ્રેક્ટિકલ કરજો. Okay. Total numbers of the mitochondria in the cell. In some of the algae there is only one. And suppose we are thinking about our muscles, there are too much mitochondria because our muscles need more energy. So the total number of the cell, the total number of the mitochondria in the cell depends on the activity which is going on inside the cell.
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अगर जो कोई भी सेल में बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इफ मोर एंड मोर एनर्जी इज नीडेड इन द सेल, in that particular cell, certainly the total number of the mitochondria will be too much higher. For example, in case of the sperm, the middle portion contains so many mitochondria. કારણ કે એને ઓલી પૂંછડી હલાવવાની છે તો એના માટે એનર્જી જોશે, તો ફોર ધેટ you need too much ATP molecules. अपने मसल्स में भी रहेगा. But if we think about in the cells of our skin, there is no need of the energy compared to muscles. So here we will find lesser number of the mitochondria in our skin cell. तो जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा नीड है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेगा, कम नीड है तो कम रहेगा. उसका शेप सोसेज और सिलिंड्रिकल. हाँ, मे बी આપણે ઓલી સિંગ ખાઈએ, ખબર છે સિંગ ખાઈશ ને ઓળા બધા એની જેવું હોઈ શકે. તો આપણી બુકમાં બે આપ્યા સોસેજ. સોસેજ ઇઝ એ આઇટમ પ્રિપેર્ડ બાય વ્હાઇટ કલર્ડ પીપલ. હા, બધા ધોળિયા છે ને બધા ફોરેનર્સ, એણે મીટનું એક એવું ખાવાનું બનાવ્યું, ઉસકા શેપ ऐसा था, उसको સોસેજ બોલते हैं. વેરી ફેમસ. આપણે જેમ ચિપ્સ ફેમસ હોય, ચિપ્સ આપણે હોય ને ફેમસ ઇન્ડિયામાં, પછી ભજીયા ફેમસ હોય, તો આપણે કોઈકને એમ કહીએ કે ભાઈ ધીસ લુક્સ લાઈક, ઉસકા શેપ લુક્સ લાઈક ભજીયા, ધેન તો આપણને બધાને ખબર પડી જાય, ઓકે આ ઓલું આપણે ભજીયું જે ખાય છે એની જેવો આનો શેપ છે, એમાં સોસેજ શેપ હોય, બરાબર. उसका साइज, उसका डायमीटर रहता है 0.2 to 1.0 mm एंड एवरेज इज 0.5 mm. लेंथ रहती है 1 to 4.1 mm. दिस ऑल आर न्यूमेरिकल information that you are to mug. If it is asked always directly, then you can get 4 marks of it, right? Some of the extra point, it is also known as cell present in cell. सेल के अंदर एक सेल है, वो ये है, उसको ये ऐसा भी बोलते हैं, सेल के अंदर सेल. Why this so? Because we will see now that this mitochondrion has got its own DNA. So some of the functions which are going on inside the mitochondria are actually under the control of its own DNA. तो सिर्फ वो अपना वाला डीएनए है, तो वो अंदर ये जो कोई सेल के अंदर है लोकेट हुआ, ये जो सेल का न्यूक्लियस होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस वी फाइंड डीएनए. So whichever the functions are going on in the mitochondria are under the control of its own DNA as well as are under the control of its nucleus DNA. दोनों से कंट्रोल होता है. There is no any other organelle in the animal cells which is behaving like this. So this is just acting as a cell in the cell. That is why it is called cell in the cell, because it has got its own genetic material in the form of the DNA that we will see. Circular DNA is located inside, as we could observe in the bacteria. Semi-autonomous organelles, partial work is done by itself and the partial work is under the control of the DNA present in the nucleus. And at the time of the cell division, the fission we can see in the mitochondria. So it has got the feature to divide. Suppose there is one cell containing 4 mitochondria, and when the cell division occurs, the cell is divided into 2 parts. Now each part means each cell will have 4 mitochondria. બેમાં 4, એક આપણે જે સેલ લીધો એની અંદર 4 મૂકી, હવે આ સેલમાં સેલ ડિવિઝન થયું તો જે 2 સેલ બન્યા, દરેક સેલમાં 4 માઇટોકોન્ડ્રિયા હશે. So what might be happening inside this cell at the time of its division? તો કે પહેલા અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા 4 હતી, એમાંથી કેટલી થઈ હોય? 8. So mitochondrion itself divide and give rise to 2 छोटी वाली, मगर वो बनाती है तो एक में से 2 बनती है. ओके, तो वो तो ऑटोनोमस. लेकिन at the time of its division also there is a control of the DNA present in the nucleus of that particular cell. तो आधा काम अपनी तरीके से, आधा काम वो जो उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए उसके हिसाब से, इसीलिए उसका नाम रखा सेमी ऑटोनोमस. It is also known as endosymbionts. Endosymbionts. It is living inside the cell.
It is an organelle of the cell too. It has its own features too. It is behaving like one unit in the cell. It also performs some of the functions by itself, right? So it is acting as a cell in the cell, correct? But whichever the activity is occurring in the mitochondrion is actually beneficial for the cell, and the whichever activities are going on in the cell is also beneficial to the mitochondrion. समझ में आ रहा है? માઇટોકોન્ડ્રિયા જે કામ કરે છે એના કારણે સેલને બેનિફિટ થાય છે, સેલ જે કામ કરે છે એના કારણે માઇટોકોન્ડ્રિયનને બેનિફિટ થાય છે. બોથ ગેટ્સ બેનિફિટેડ. So such kind of the interaction is known as symbiosis, as this is occurring inside the cell because the mitochondria are living inside the cell. That is why it is called endosymbionts. Clear? Some of the new points for you. These points are not given in our book. ये सब अपनी बुक में है, ये याद रख लो. But Janus Green, the name is not given in the book that you are to mug. Okay, it's a name of stain. Now, my dear friends, we are going to discuss about its structure. It is also double-layered organelles, but I will draw only the outermost membrane of it. So let me draw its outermost membrane, black colored. Okay, it is continuous, and here we can see its inner part. Its inner part, its aqueous solution that contain water is called aqueous. Aqua bole to water. Okay, now I will draw inner membrane in dotted line. I am drawing inner membrane. So due to the synthesis of the inner membrane, this part was divided into two parts. The first part remain inside, which is called matrix of mitochondria. જે અંદરનો પાર્ટ એનું નામ શું પડ્યું? માઇટોકોન્ડ્રિયાનું મેટ્રિક્સ. અને the second part which lie in between outer membrane and inner membrane. Here I have to write outer membrane. And this is inner membrane. उसका नाम क्या रखा? इनर मेम्ब्रेन. ओके, सो दिस इज द पार्ट विच लाई इन बिटवीन इनर एंड आउटर. तो दो कंपार्टमेंट हो गया, बाहर वाला अंदर वाला. बाहर वाला ये पूरा का पूरा बाहर ही रहेगा. नाउ दिस इनर मेम्ब्रेन gets invaginated towards inner side to form such kind of the processes. આ inner membrane જ છે, આવી રીતના અંદરની બાજુ આ વળી ગયું. It has curved towards inner side, just like mesosome we could see. Okay, now these structures are collectively known as Christies. ये सब को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी. सो क्रिस्टी इज नथिंग बट द invagination of the inner membrane towards inner side in the form of either tube or either flattened tube like structure, or it may be in the form of the vesicle. Its shape also vary. Its structure also vary from different kinds of the cells to the different kinds of the cells. So cell to cell it vary. Okay. So this may be flattened. Okay. Now the inner material I will draw. I am drawing matrix of it. This is matrix. Red is matrix. I am in structure of mitochondrion. Outer membrane, inner membrane, space between these two membrane, intermembrane space we can tell, and inner membrane which are curved towards inner side to give rise to cristae.
It's a substance which is filled inside is known as its matrix. Matrix contain circular DNA. ये उसका DNA है. Inside also there are ribosomes. 2 के 3 करिए. Up here I will write only ribose. So you are aware it is ribosomes, but its kind is 70S. So it is similar to that of bacteria, means prokaryotic cell. Okay. Plus inside also we find RNAs. So many RNAs. So if we think about that, there is DNA, there are ribosomes, there are RNAs. These all are for which purpose must be there inside. તો આપણે જોયું તો છેલ્લે કે આ બધું હોય ત્યાં શું થતું હોય તો કે પ્રોટીન સિન્થેસિસ. So these are the facilities for synthesis of protein, and these proteins are acting as an enzymes to make successful processes which are going on inside the matrix. મેટ્રિક્સમાં જે બધી પ્રોસેસ થતી હોય એમાં જે બધા એન્ઝાઇમ્સ જોઈએ એ એન્ઝાઇમ્સ બધા બનશે આને કારણે. રિબોઝોમ, સર્ક્યુલર ડીએનએ, આરએનએઝ. પાકું? અભી થોડુંક પાછું ગુજરાતી આવી જશે, એમાં કાંઈ વાંધો નથી ને? હવે તો આવે તો વાંધો. નાવ યુ આર અવેર that amongst नो इंग्लिश somehow. Okay, now let me move. तो ऐसा हुआ है. We are in structure. Some of the particles are located અહીંયા આવું હોય જો, પણ આ આખી સરફેસ અલગ અહીંયા રાખવા માટે થઈને દોરીશ. Along the membrane, along the inner membrane. Okay, at every place there are some of the specific kind of the particles are attached. Now suppose I will take out this membrane, this inner membrane. Inner membrane બાર કાઢ્યો તો some of the particles remain towards outer sides. એ આમ કરીને અહીંયાથી આમ કરીને બહાર આવ્યો, બહારની બાજુએ રહ્યું. Some remains towards inner side and some in between embedded. Okay, so some is actually facing outer side, some is facing towards inner side, some are there in the middle side. These all particles together, some of the particles are colored particles, together constitute electron transport system, collectively considered as electron transport system. Now the name itself indicates that transportation of the electron must occur. It must be occurring from this, because उसका नाम है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से होने वाला है, इलेक्ट्रॉन आएगा भी. Moreover, the most important thing in this, the most important structure, I will draw it on the Christie. One stalk I am drawing, and on which just a bit like structure which is called F1 particle. So many F1 particle we can observe which are embedded into inner membrane. અહીંયા હોય બધી જગ્યાએ હોય. Now suppose I will enlarge this blue colored membrane, so I have to draw that color, that blue color membrane. Be here. इसके अंदर F0 पार्टिकल रहता है, उसके बाद स्टॉक रहते हैं, उसके बाद F1 पार्टिकल रहता है. F1 particles are required for synthesis of ATP, adenosine triphosphate. When scientists isolated all the F1 particles from the mitochondria, what they found, you know, there was no any ATP molecules in the mitochondria. उसके बाद डिस्कवर हुआ कि F1 पार्टिकल है, अगर वो है तो ही ATP बनता है, वरना ATP नहीं बनता. When you will go through this topic, ये F1 पार्टिकल नहीं आएगा.
लेकिन अपना एक 14th लेसन है, उसका नाम ही रेस्पिरेशन है। इसके बिना हम वो लेसन कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। ओके, तो आपको तो ये सब याद रखना ही है ना। नाउ अभी इसको 3D स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसमें क्या वांधा है? किसी को वांधा नहीं है ना भाई। तो ऐसे कट किया था, आधा पार्ट बाहर डाल दिया था, ये तो आधा है, इसके ऊपर आधा रखो। हाँ, सो नाउ यू आर अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। आउटर लेयर कंटिन्यूअस, इनर लेयर इन्वेजिनेशन क्रिस्टी, इनर लेयर के ऊपर ईटीएस प्लस क्रिस्टी, और सारे के सारे इनर लेयर में F1 पार्टिकल्स विच आर फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बीच में जो पड़ा है होमोजीनस, होमोजीनस એટલે એકરસ બધું સાથે હોય એવું, and it is aqueous because inside there will be water. उसके अंदर है अपना सर्कुलर डीएनए that makes this organelle semi autonomous। हाँ, अपना सर्कुलर डीएनए, अपना 70s काइंड का राइबोसोम्स, अपना आरएनएज ऑल टुगेदर परफॉर्म फंक्शंस कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। तो अपना प्रोटीन बनता है, और ये जो प्रोटीन है वो सम ऑफ द एंजाइम से, अभी ऐसे याद रखना, उसका रोल आएगा ना अभी। ओके, नाउ द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनेल इज एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration is occurring in 3 different phases. First phase, glycolysis. Second phase, Krebs cycle, as it was discovered by Hans Krebs. That is why it is called Krebs cycle. Third is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. કેવડું મોટું નામ આવ્યું, oxidative phosphorylation. Aerobic respiration is the process in which simple organic substance like glucose is broken down so as energy is liberated to form ATP molecules. If this so happens in the presence of oxygen, then it is called aerobic respiration. If this so happens in the absence of oxygen, then it is called anaerobic respiration. So here I will put oxygen as half O2. It is available as half O2 in the matrix. આ ભાઈ ઓક્સિજન ક્યાંથી આવ્યો? સપોઝ આપણો જ સેલ છે, આપણામાં જ માઇટોકોન્ડ્રિયા. વી નીડ ટુ મચ એટીપી because we have got muscles. In the muscles there are so many ATP molecules की जरूरियत है ना. So when I inhale the air, O2 containing air will go to the alveoli. In my respiratory system the last part is alveoli. वहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ. हीमोग्लोबिन विल कैरी दिस ऑक्सीजन एंड दिस हीमोग्लोबिन विल गिव दिस ऑक्सीजन टू सेल. तो ये सेल मेम्ब्रेन मान लो, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आया, डिफ्यूज होके साइटोप्लाज्म में से वो यहाँ पर पहुँचा है. सो दिस इज एक्चुअली ऑक्सीजन. इसका सोर्स है एटमॉस्फेयर. अपने में थोड़ा ही ना ऑक्सीजन बनता है, वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, राइट. तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही है, बट इट इज अवेलेबल हियर एज हाफ O2. ओके, अभी जो आपका टॉपिक है बुक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की शॉर्ट नोट, उनमें ये सब नहीं होगा. लेकिन ये एनसीईआरटी के सिलेबस की बाहर की चीज़ नहीं है, आगे आने ही वाली है ये सब बड़ी होके. ओके, तो समझना जरूरी ही है. ये कोई ऐसी एक्सरसाइज अभी चल नहीं रही है. एक्सेस जो एनसीईआरटी में नहीं था वो ये 1, 2, 3 और ये जेनस ग्रीन बी वाला, ये कुछ एक्स्ट्रा है. वैसे हमको हर एक लेक्चर में ऐसा थोड़ा थोड़ा चाहिए. नाउ ग्लाइकोलिसिस, उसका नाम इंडिकेट्स इट्स ए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. सो वी वांट टू लिबरेट द एनर्जी विच is stored in the glucose. Where this energy is stored in the glucose?
सो यू माइट हैव स्टडीड इन द केमिस्ट्री कि भाई एनर्जी तो बॉन्ड के अंदर होती है. सो आई वांट टू शो यू द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. उसका एक साइक्लिक रहता है, एक लीनियर. आई विल ड्रॉ लीनियर. फर्स्ट कार्बन, second, third, fourth, fifth and sixth, because glucose is C6H12O6. Glucose is equal to C6H12O6. It is aldohexose, so I have to show you aldehyde group. CHO represent aldehyde group. C double bond O ketone, CONH amide, OH hydroxyl, COOH carboxylate. ये सब आ गया ना एसएससी में. You must aware about this. Okay, CH2OH. सिक्स्थ कार्बन ऊपर, यहाँ पर OH 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 और H H H H. તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. મારે તો એવરી યરનું થયું એટલે મને આ બધું યાદ હોય. But here C6 1 2 3 4 5 6 C6 H12 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Oxygen 6 1 2 3 4 5 6 हो गया. So this is the simple structure of glucose. Here you can see the bond in between C and C. In this bond energy is stored. We want to make it liberated. We want to liberate it. તો આની અંદર જે એનર્જી છે એને આપણે લિબરેટ કરીને બહાર લાવીશ. સો ફોર દેટ आई हैव टू ब्रेक द बॉन्ड. तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने की प्रोसेस है ये सब. अभी आ गया समझ में. सो दिस इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन. तो उसका बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, उनमें से एनर्जी बाहर आएगी. ये एनर्जी से ये F1 पार्टिकल ATP बनाएगा. सो F1 इज प्लेइंग रोल जस्ट लाइक गौर महाराज एंजाइम. किसको जोड़ने का उसका रोल है. ओके, मूविंग अहेड. ग्लाइकोलिसिस इज द स्टेप इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड. पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड दिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. You saw this process. Even if we think that there are two molecules of the pyruvic acid from the glucose. So glucose is how many total number of the carbon? 6. So in each pyruvic acid कितने कार्बन रहेंगे? C3 ही रहेंगे ना. पायरुविक एसिड की फॉर्मूला लिखो, CH3COCOH है. CH3COCOH है. करेक्ट. पायरुविक एसिड ऐसा है. Now the process which you are able to see here, that this is glucose and let we cut it in this fashion. टक 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 टक. ये दो मॉलिक्यूल हो गया, तीन तीन कार्बन वाला दो हो गया. ऐसे नहीं होती है. This glucose has to pass through 10 steps and in the final step we are getting this molecule pyruvic acid. पहला ग्लूकोज होता है, उनमें से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, उनमें से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में से DHAP में से PGL में से 1,3 BPGA मतलब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. आखिर में ये पायरुविक एसिड आता है. तो ऐसा 10 स्टेप रहता है. At the end of this 10 step we are getting 2 molecule of the pyruvic acid. આ બધા 10 સ્ટેપ હું જે બોલ્યો એ બધા તમારે ભણવાના આવશે. ગ્લુકોઝ આવશે, પછી ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ, ફ્રુક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટ, પછી ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટ, એક બાજુ ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન ફોસ્ફેટ, એક બાજુ ફોસ્ફોગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ, એમાં પાછો ફોસ્ફેટ ઉમેરાય એટલે 1,3 બાયફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ, પછી 3 ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ, પછી 2 ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ, પછી એમાંથી 2 ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવિક એસિડ, છેલ્લે પાયરુવિક એસિડ. This is called glycolysis. तो धीरे धीरे ऐसी प्रोसेस हुई. But this process is occurring in the cytoplasm. Okay, so some of the bonds are broken down now. Now this pyruvic acid enter to mitochondria. उसका फर्दर ब्रेकडाउन होने को मांगता है.
એને પાછું તૂટવાનું છે, આ તો ઓક્સિડેશનની પ્રોસેસ છે. સો ઇન ધ મેટ્રિક્સ ઓફ ધ માઇટોકોન્ડ્રિયા Krebs cycle is going on. There is one cyclic process. This is the linear process. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या? कोई एक एक्स है, उनमें से वाई बनता है, उनमें से जेड बनता है, उनमें से बी बनता है, उनमें से सी बनता है, उनमें से फिर से एक्स बनता है. तो एक्स में से एक्स, इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. सो सच काइंड ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द मैट्रिक्स discovered by scientist Hans Krebs. So the name is given after his name, that is Krebs cycle. तो उसमें क्या होता है, मैंने अभी जैसा यहाँ पर बताया, एक में से दूसरा, दूसरा में से तीसरा, तीसरा में से चौथा, में से पांचवा, ऐसा 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 फिर से ये बना. ओके, फिर से ये बना. एक साइक्लिक प्रोसेस अभी चल रही है, उसका भी स्टेप है. ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से स्टार्ट होके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तक आ जाएगा. ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए, साइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड, मैलिक एसिड और फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. ये ऐसा एक क्रेब्स साइकिल है, यहाँ पर चल रहा है. मैंने अभी शॉर्ट में बताया आपको. ओके, सो अब भी यहाँ पर ध्यान रखना हो, ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड है वो इसके अंदर आ गया ब्रेकडाउन होने के लिए. तो उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो ब्रेकडाउन हो गया तो इसमें से एक CO2 बाहर आया. तो जैसे O2 अंदर आया था वही मार्ग से CO2 बाहर निकलेगा. वी टेक ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ द इनहेलेशन. શ્વાસ લીધો તો અંદર આપણે ઓક્સિજન જવા દીધો, ક્યાં ગયો તો અલ્વિયોલાઈમાં, લંગના, ત્યાંથી બ્લડમાં HB સાથે, ત્યાંથી સેલમાં. ઓકે, એ પાછો અહીંયા હતો ને. હવે જે ફૂડ લીધો તો એ તો ગ્લુકોઝ હતો, એ તે સેલમાં ગયો, એ ગ્લુકોઝ टूटियो, पायरुविक एसिड उसका ब्रेकडाउन हो गया तो क्या हुआ, पायरुविक एसिड बन गया. उसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर से CO2 बन गया. ये CO2 यहाँ बना. डिफ्यूजन के बाद ये CO2 कहाँ पर आया, साइटोप्लाज्म में. यहाँ से वो CO2 कहाँ पर गया, ब्लड में. ब्लड ये CO2 को लेके कहाँ गया, अपने अल्वियोलाई में. वहाँ से एक्सहालेशन में बाहर निकाल दिया CO2. ओके, प्लस रिलीज ऑफ so many time 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन अकर्स. तो ये जो CHO वाला एक पार्ट था पायरुविक एसिड, उसका ब्रेक डाउन हो गया, उनमें से CO2 बाहर चला गया, H+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. नाउ इन द प्रोसेस व्हेन वी फाइंड द रिलीज ऑफ 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस. પણ જો કોઈ પણ રિએક્શન થતું હોય એમાં 2H+ એડ થતા હોય, એટલે કે ખાલી એકલા H+ એડ થતા હોય કે પછી ઇલેક્ટ્રોન એડ થતા હોય, then it is called reduction. During this time energy is also liberated. Okay, so this process is actually oxidation process. So the removal of proton and electron and energy, it is called oxidation, or adding of oxygen to it, it is called oxidation. Okay, so this is actually oxidation process. So now what happens, for the synthesis of the ATP molecules, for the synthesis of the ATP molecule, there is one theory which is called chemiosmotic theory. इसका सिर्फ नाम याद रखना है, chemiosmotic थियरी. इसका सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है. इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ. ये सब साइमल्टेनियस प्रोसेस है. हमारे सेल में ग्लाइकोलिसिस सिर्फ एक ग्लूकोज में नहीं होता है, बहुत सारे ग्लूकोज में होता है. तो बहुत सारे पायरुविक एसिड बनते हैं, बहुत सारे इसके अंदर जाता है. वन क्रेब्स साइकिल इज गोइंग ऑन हियर, वन इज हियर, वन इज हियर, वन इज हियर, 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 हियर. At so many places in the matrix, Krebs cycles are going on and on. Okay, now this released electron, this electron will travel through the electron transport system. Okay, correct. It has to pass through from one particle to second to third to fourth, and this proton will enter to this space. ये जो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर ये H+ आ जाएंगे प्रोटॉन.
तो ये सब भी प्रोटॉन यहाँ पर आ गए। तो ऐसे यहाँ पर भी क्रेब्स साइकिल चलता है यहाँ पर, तो ये सारी की सारी स्पेस, दिस स्पेस रिमेन फिल्ड विथ proton. So here we find more amount of proton, H plus, and inside we find lesser amount of proton. So what we are getting, the gradient of proton. What is the meaning of that? तो कि एक बाजू વધારે प्रोटॉन होगा, एक बाजू ओछा प्रोटॉन होगा. So generally what happens when this proton will get proton channel, it will travel from its higher concentration towards its lower concentration. तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो फिर से ये बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर यहाँ पर तो ज़्यादा है, अंदर कम है ना. ओके, ऐसा कुछ होगा. ये पूरी की पूरी थियरी आएगी. अभी जो थोड़ा मुझे चाहिए आपके पास से वो क्या है, सीख लेना. ये जो प्रोटॉन है ना, ये ऐसे निकलते हैं यहाँ से बाहर, पासिंग थ्रू F0 स्टॉक एंड F1. ओके, यू कैन सी हियर दिस F1 इज फेसिंग मैट्रिक्स. F1 मैट्रिक्स ની બાજુ છે, તો પાછા પાછા આ જે પ્રોટોન આવશે એ બધા ક્યાં આવશે? મેટ્રિક્સમાં જવાના, એટલે કે અહીંયા જવાના ને. હે, હવે બધા હવે જો હરકીટને સમજજો. સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધી transportation of H plus from its higher concentration towards its lower concentration, it liberates energy. આવું જ્યારે થાય ત્યારે થોડીક એનર્જી મુક્ત થાય, રિલીઝ થાય, અને એ જે એનર્જી રિલીઝ થયેલી હોય ને એનો યુઝ આ F1 પાર્ટિકલ કરે. અને F1 પાર્ટિકલ આ ADP ને P ની સાથે બાઇન્ડ કરી દે. So as ATP molecule is synthesized. Further, I am telling you, during the traveling of the H plus from its higher concentration towards its lower concentration passing through the F0 stalk and F1, it liberates some of the energy, and with the help of this energy, F1 particle binds ADP and P to give rise to ATP. समझ में आया? तो आ બધા પ્રોટોન કોના હતા? તો કે પાયરુવિક એસિડના. અને પાયરુવિક એસિડ કોનો હતો? ગ્લુકોઝનો હતો. એનર્જી કોની છે? ઇનડાયરેક્ટ. તો કે ગ્લુકોઝની છે, ઓલા બોન્ડમાં હતી એ છે. યુ કેન સી હિયર ધેટ આ બધા H2 પાછા અહીં આવ્યા. નાવ ઇન ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ, the final electron acceptor is playing role just like an enzyme. એ પોતે એન્ઝાઇમનો રોલ પ્લે કરે. એ શું કરશે ખબર? આ બધાને બાઇન્ડ કરી દેશે. તો શું બનશે? તો શું બનશે? વોટ વિલ બી ફોર્મ્ડ? H2O molecule. क्या बनेगा? H2O molecule. Now remember the equation of aerobic respiration. C6H12O6 plus O2 will give CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. C6H12O6 plus O2. ऐसा था ना? And generation of ATPs. Due to the complete oxidation of one molecule of glucose, we will get 38 number of the ATPs. तो उसका इक्वेशन अगर अपने को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, C6H12O6 plus O2 will give CO2 plus H2O plus ATP's molecule. The actual equation is something like this: 6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O will give 6CO2 plus 12H2O and 38 total number of the ATPs. जो ओरिजिनल है वो ये है. ओके, एंड रिवर्स टू इट विल गिव फोटोसिंथेसिस. तो अभी ये उतारना है, अच्छी तरीके से उतार लो. F1 is playing role just like an enzyme. स्टार्ट कर दो. One very simple meaning of phosphorylation: adding of phosphate is known as phosphorylation. So this process is called phosphorylation and this is oxidation, oxidative phosphorylation से ATP बनता है. ओके,
1 मिनट देता हूँ, 30 सेकंड। शॉर्ट बोट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके